5 लाख बहुत रीजनेबल है। नहीं था, वो तो दे ही नहीं सकता, कहाँ दूंगा। तो आपकी सैलरी वगैरह कितनी है? प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह। जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, पायजब काइंड ऑफ थिंग्स। किससे लेना? लड़की से लेना है सर। दिए होंगे ये ना? हाँ तो मांग रहे हैं ये। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि आपस में अपना सामान एक्सचेंज कर लेंगे। A reasonable amount be granted, otherwise I may file 25 application, your lordship may decide it. व्हाट इज द रीजनेबल अमाउंट अकॉर्डिंग टू यू? आपके वकील साहब कहाँ हैं? ये थाने बाद में नहीं सर, 2 लाख जो हुआ था वो देने को 2 लाख में क्या होगा? तो वही दे सकता हूँ। My lord, on the last date, your lordship has taken in chamber mediation, my lord. Yes. My lord, 2 lakh rupees as per decree is overdue, which she says the other side informed that that is ready. But they have given last night, my lord, this list to me. However, in the meantime, they did not. What about the mediation? It failed. Mediation before the mediator. Before the mediator, the respondent did not turn up. Then the respondent and the appellant came before your lordship in the mediation, and an explanation was given to both of them. Some reasonable amount, my lord. He has given a list wherein, my lord, he agrees that this stuff is there. But हर ज्वेलरी ही रिफ्यूजेस। इसका कोई 2-4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोना ये बताता है कि मुझे उससे लेना है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, पायजब काइंड ऑफ थिंग्स। किससे लेना है? कल लड़की से लेना है सर इन्होंने। इनको? हाँ, ऐसा इन्होंने कल रात में 10:30 बजे लिस्ट भेजी इनके पास। आप दिए होंगे ना, उसी को मांग रहे होंगे ना? ये मांग रहे हैं, दिए होंगे ये ना? हाँ तो मांग रहे हैं ये। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि आपस में अपना सामान एक्सचेंज कर लेंगे ये। सर जो भी वैल्यूएबल है सर दे विल एक्सचेंज एंड सेटलमेंट क्या हो रहा है? सर ही इज नॉट सेइंग whatever our articles are lying with him. He is just claiming some articles which he states that are in our possession, including Mangalsutra and all that. So, my lord, that is also not too high. What he is claiming is not in the lakhs of rupees. 2.5 ग्राम के 2 कंगन बता रहा है। What this court, my lord, proposed him to offer the girl a reasonable amount. 2 लाख तो कोर्ट ने नीचे दिया alimony. So he has not offered anything as yet, my lord, towards that. A reasonable amount be granted, otherwise I may file 25 application, your lordship may decide it. Looking to the circumstances. What is the reasonable amount according to you? You must have consulted your I have consulted my client. She is agreeable to 5 lakh rupees in total, including the 2 lakhs granted by the trial court. अच्छा, including that. Yes, and my lord, I expressed before your lordship also, my lord, some reasonable amount as your lordship. आपके वकील साहब कहाँ हैं? साहब तो आएंगे सब। उन्होंने फोन करा था उनको पूछने के लिए, मैं आ गया। 5 लाख रुपए बोल रहे हैं टोटल। 5 लाख बिल्कुल रीजनेबल है, बहुत कम बोल रहे हैं। तो 2 लाख तो 4 साल पहले देने थे मुझे डिग्री के समय पे, वो भी 2 लाख क्या था हमारे वकील साहब ने, वो नहीं दे सर। नहीं था मुझे तो, पर वो वकील साहब एक्सपायर हो गए तो उन्होंने कुछ हो नहीं पाया, कुछ कोरोना लग गया तो चक्कर में डिले हो गया था। तो मैं तो एग्री हूँ, आज खत्म हो गए भी 2-3 साल 2 साल वो तो एग्री हूँ देने के साथ। लीजिए, देख लो क्या देने 2 लाख रुपए देने को तैयार है। थाने बाद में नहीं सर, 2 लाख जो हुआ था वो देने को 2 लाख में क्या होगा? तो वही दे सकता हूँ। नहीं, 5 लाख बहुत रीजनेबल है। नहीं था, वो तो दे ही नहीं सकता, कहाँ दूंगा। तो आपकी सैलरी वगैरह कितनी है? प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह। क्या करते हैं भैया? प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। हाँ, क्या अंदर लोटस में? लोटस में 25-30 हजार तो सैलरी होगी। नहीं साहब, 15,000 रुपए 40 से 50 हजार। नहीं साहब, अभी आपको 15,000 तो सैलरी है। बाद में जो आप सामान बेचते हैं ना, उस पर कमीशन। आपको तो गोडाउन में काम करते हैं ना, आगे आगे चलते हैं आप लोग सब। बिल्कुल नहीं साहब, तो गोडाउन में काम करते हैं। कोई कस्टमर जाता है तो उसको कन्विंस करके बेच ही देते हैं सामान। नहीं साहब, तो सेल्स में नहीं है ना साहब, सेल्स में गोडाउन में काम करते हैं। ये जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, इसमें सैलरी कम देते हैं, कमीशन एक्स्ट्रा देते हैं। सब तो वो गोडाउन में काम करते हैं, तो उनको तो कमीशन। अगर सैलरी ज्यादा दे दी तो आप बेचोगे क्या माल पे? कस्टमर आएगा, घूम के चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक में 5 लाख बिल्कुल रीजनेबल है। अदरवाइज we'll enhance on the judicial side. 2 lakhs is very meager amount nowadays. Permanent alimony, then you will not have to pay anything. शादी कर चुकी है, वो भी शादी कर चुकी है ना, वो भी देना पड़ेगा आपको। शादी कर। कहाँ शादी की? सर हमने उनका बोला कि आपने शादी करी थी। She says, he says that the girl is. तो आपने शादी कैसे की? When this appeal is pending. तो डाइवोर्स के बाद करी ना, डाइवोर्स जो हो गया था उसके बाद ही। डाइवोर्स हो गया? हाँ, स्टे नहीं है। Without complying the condition of covenant, there is no stay.
There is no stay in this custody. On the last date of hearing, 20 लाख का ऑफर दे रहे हैं, but it's not enough. He is not in a financial position to pay that amount, and on last date of hearing, your lordship. नहीं, before you your have lordship, it was agreed 4 lakhs also, 2 lakhs. Lordship, Granted 2 years back. that he is ready to pay lordship, and on the last date of hearing before your lordship, it was agreed that the parties will go as per the decree passed by the learned trial court. So, as per the trial court, your lordship, the trial court has directed an amount of 2 lakh. It was agreed between the parties on the last date of hearing. Accordingly, he is ready to pay that amount, and he has brought that amount. And apart from that, that list. मेरे ख्याल से आपने कहा था कि 2 लाख लेने को तैयार है, प्लस सामान एक्सचेंज. Yes, this was agreed between the parties. I remember. Yes, lordship. मैंने कहा था कि 2 लाख दे दें, हमारा ज्वेलरी और जो आर्टिकल से दे दें, तो और मैंने उनके जो दूसरे आर्टिकल We have bona fidely sent all the list yesterday only. पुराने सामान की लिस्ट Not reverted till yet. yesterday last time case was listed on 4. Lordship, we have given the list. We have given the list, and accordingly we are ready to accommodate that amount as well as the. भाई you supplied him very late. उनको टाइम भी नहीं मिला सोचने का. Lordship, keep it in the next week back, and we will change the का अमाउंट जो 4 साल से पेंडिंग है वो आप प्लान तो आपको इसलिए दिए थे कि आप सेटलमेंट कर लेंगे. Lordship, चाहे एक साल में बाद ही आएंगे आप. 2 calls also. I made 2 calls to their office. हाँ? I made 2 calls and messaged also to their office. And Milord, he was not here on the last day. That is why टाइम दिया जाता है, रीजनेबल टाइम दिया जाता है ताकि आप लोग सेटल कर ले. पर वो आखिरी दिन जिस दिन केस लगता है उसी दिन याद आती है. That is why all the cases are adjourned every time. Reply भी फाइल करेंगे same day. What is the use of granting 4 weeks, 2 weeks? 3 दिन का समय देंगे तो भी फिर वही that is more better than. क्या करना है बताइए, देने को आएगा. we will provide all the goods today itself. आज ही दे देंगे, अमाउंट भी आज दे देंगे और गुड्स भी सब आज दे देंगे. तो 2 लाख रुपए का बोल रहे हैं. मैंने what I requested. अमाउंट भी दे रहे हैं ना आपको. अमाउंट दे रहे हैं. What I requested this court for that the girl is well, she has completed her education, now she is preparing for. नहीं, बट लास्ट टाइम जो अंदर चेंबर में बात हुई उसमें ये था कि यू विल कंप्लाई विद द डिग्री. No, sir. मैंने कहा था कि सर a reasonable amount may be granted. 2 lakh is on a mere side. Yes, Milord directed them to make the list of the articles also, but ये सब सामान ऐसा हो गया होगा सर कि is of no use. क्या भी मतलब यूजेबल होगा उसको बाहर निकालेंगे, it will not be of any use to girl also. सब कुछ बहुत पुराना है. काफी शादी है. So the marriages of the year. It did not last even for 2009. It did not last even for an year. 2009 और 2018 में तलाक का आपने केस लगाया था after 8 years of marriage. And it is on the order sheet taken by lordship that the parties will comply with the decree passed by the London trial court. एक्सचेंज का था. Exchange and the amount. तो सर वो ज्वेलरी पे डिस्प्यूट क्रिएट होगा. हम बोलेंगे हमारा ये सामान रखा है, आप बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं आपका सामान. तो इसकी वजह सर एक अमाउंट भी बी फेयर. ऐसा ही जो दिया नहीं उसकी भी लिस्ट में नहीं दिया. So that I am not support. वो कहाँ से लाके देंगे आप? That therefore will not. I understand this. Therefore I am not supplying any list to him. What I am requesting is instead of this exchanges, will not a reasonable amount towards a permanent alimony be granted by. तो 2 लाख तो इनको 4 साल पहले देने तो वो भी अमाउंट मतलब if your lordship directs me not that can be not provided to her because वो सब बात हो गई थी ना, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं. इन्होंने चेंबर में बोला था कि मेरी ताकत नहीं है 2 लाख से ऊपर देने की. ये सब बात हुई थी अपनी. Then you agreed. no I said not that some reasonable amount. तो आपने कहा था कि I will pass an order on the judicial side about the permanent alimony if you are not ready to. No, lordship, it is not the part of the record. Not but lordship. आपके अर्नामेंट्स तो वहाँ होंगे नहीं, ले आए होंगे सब. सर ये मैट्रिमोनियल इश्यूज में ये हमेशा झगड़ा आता है. प्रिवेंटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स मिला है. So what happened? The trial court may not in 498 case convicted them. The appellate court may not reverse that finding. And on that basis पहला इनका डिवोर्स का सूट मेरिट्स पे डिसमिस हुआ था. उसके बाद ये सेकंड सूट आपने लगाया उन सारी चीजों को they did not bring it on record in the next suit. Therefore, Milord, that new suit was taken. The earlier suit was dismissed. Everything was considered by the trial court. You have been appointed as a teacher in the college. You are drawing salary, monthly income. Everything has been considered.
and then rupees 2 lakh has been granted. But she is not a teacher, मतलब which वाला को नहीं, कॉलेज लिबरल कॉलेज राव में वेतनिक सेवा दिए जाने के तथ्य की स्वीकृति की गई है. she He is also earning. but she worked previously, my lord. Then she has now completed her education, my lord. She was undergoing education and now Education. sir LLB करा उसने. LLB she has completed LLB recently and she's preparing for the CJ examination. So she agreed last time. It was agreed. There was no dispute with respect to the जब वो agree होगा तभी तो हमने time दिया पूरा. But suppose my lord she agrees my lord to an amount of 2 lakhs. आज क्यों नहीं बुलाया आपने उनको पास? सर वो नीचे से वाले she arrived नीचे सेवा केंद्र पे she is being hanged up over there. She is staying for the permission. She arrived in the court. I just came to. हमने भी बुला लेता हूँ. पार्टी सहमत हो रही है, आप लोग सहमत से मेरे को सर मेरी पूरी सहमति if the girl is agreeable my lord what I have to do about it. नहीं, बहुत बड़ा सेटलमेंट हो गया. छोटी सी बात बची है, उसको जाने दीजिए. इनको मेरे को एक बात बताइए सर I just my lord put a my lord before this court आप भी अच्छे से सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास करेंगे ठीक से. अभी इस चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि सर ध्यान ना लगे पढ़ाई में. सर केवल 2 लाख रुपए का अमाउंट अवार्ड हुआ है. अगर हम इस पूरी डिग्री को चैलेंज करके और 4 साल के बाद 2 लाख रुपए लेते उससे पहले उसी के पहले एग्जीक्यूशन करके पैसे मिल जाते. As per- If she would have been agreeable to this amount and this degree as then per my information, she has remarried. As, नहीं बोला, as 4 साल डिले कर दिया. हाँ, as per my information, Lordship, she has married to someone else. And that's why they are ready to do the compromise and get the things set aside. then file an affidavit that you are not married second time. both parties can be directed. I will file also not be decided. Both the parties can करो फिर मेरिट पे करते हैं इसको. But what I'm requesting your lordship is not nothing more that सामान का जो dispute होगा 2 lakhs has already been granted. Any further reasonable amount can be directed by circumstances. क्या सामान कितने का हो? So ये जो सामान है this may now amount to 20-30,000. सारा दहेज का सामान it will include 20-30,000. आज की स्थिति में जो आप यूज कर रहे हैं from year 2008 से सामान यूज कर रहे हैं 2023 चल रहा है. Lordship, what we have done is we have supplied the list. They have not supplied any list. Still, on behalf of my client, I am saying whatever stuff or jewelry they are having with respect to us, we will leave that. We have given a list. We will leave that jewelry. You keep it with you. चलिए अभी हो This is the last we can do. मतलब then the dispute will arise about her jewelry because she will always claim that मेरे को वहां से निकाल दिया था. This will arise. क्या बोल दी है उसने? They have I'll give her this will not 4 days time maybe. तो दोनों आप That will again be a dispute. He will refuse कि मेरे पास है my lord. This always happens my lord. आखिरी तक ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू यू. 2-2.5 ग्राम की 2-3 चीजें हैं. ये इनका सामान जो आपने दिया 2.5 ग्राम एंड काइंड ऑफ एक 2-1.5 तोला होगा. ऐसा देर के सर मैं ये लिस्ट में कोई रात में दी आपने तो आई कुड नॉट. क्या सामान इनके पास है? लड़की विल से मिलो 20 दिन का के लिए टाइम दिया था आपको बैठ के बात करने के लिए. आपने बात ही नहीं की. लिस्ट का वेट कर रहे हैं. 3 का लिस्ट मिल जाता है. next week दे दे. either will milord the application before this court will both can milord. Otherwise milord your lordship I'll file an application under 25 your lordship will decide. What did you do after seeking adjournment this time? I not made 2 calls to their office milord and I have also dropped them a message. You even did not consult your client कि ऐसे milord are the items सर ये kept by him. इसीलिए सर एक सिंगल अमाउंट मैंने 5 लाख रुपीस which I have proposed milord to your lordship after milord consulting. आप unreasonable बातें करते हैं. You are not replying to the query of the court. सामान की लिस्ट सर आए. से हमने ऐसा कर दिया 5 लाख मांग लिया. अरे मांग क्या लिया? आप बताइए ना इनके पास क्या है आपका सामान. You want to linger on that side? Lord, my client is below only. आप बोले तो I will dismiss your petition. उसमें क्या है? सुन लेते हैं आपको. सुन लेते हैं फाइनली. सर अगर she is चलो 5 बार अभी आप बताओ पूछ के. नहीं तो we'll hear it finally. We will not adjourn like this. 20 दिन 25 दिन टाइम देने के बाद में आप फिर टाइम मांगते हैं. सर बैक टू द स्क्वायर वन पे आगे बढ़ा हूं मैं सुबह का ही बोल रहा हूं सर आपको. नहीं, you don't know what is the list, what is the items available with him. लाइए बुला के.